channel Studyship with Krati too. This video is for all the students who recently cleared their class 12. Some actually got their really good result and some didn't. Well, it is completely fine. So I think you might be having a question कि यार अब तो 12th भी हो गई, what do you want to do? So here's just a little career advice that I wanted to give you. Not any specific but in general. So doesn't matter आपके इस stream, this background, whatever career pursue आप जो करना चाहते हैं, this video is going to be for all of you. You can connect with me onto my Instagram, that is studyship2605, because trust me, career advice मेरी काफी अच्छी होती है. I don't suggest anything specific as I said it, but I make it clear for you all. So let's get started with this video. यार करियर एडवाइस की बात करते हैं. वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि now everyone actually giving you the career advice and all, but I just wanted to talk you all, not to anyone else. Like you recently cleared your 12th, you got your result, and I hope that कि आप लोगों ने already multiple universities में courses में apply करके रखा होगा. So what are the one that you are going to choose for, and what are your instinct that you wanted to do? Here I have just a little suggestion. आप जो भी करना चाहते हैं, आप जो भी करियर परस्यू करना चाहते हैं, anything, just make sure it should be your stream. You know, I observed this multiple times whenever people or whenever student go for कि यार ये ना मेरा बचपन से सपना था, ये ना मेरे मम्मी पापा का सपना था. You know, I'm not intended to respect your mothers, and I mean to say not intended to respect or you can say disrespect your parents. Is just a kind suggestion. Something which is not yours, कभी कभी उसकी ड्राइव कमज़ोर हो जाती है जो कि आपको लॉन्ग रन पे नहीं ले जाती है. कई बार हमें चीज़ें ऐसी लगती है, नो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू, बट ऐसा नहीं होता है. सो इट इज़ रियली ग्रेट. आई थिंक दैट if you have the same dream as of your parents, I just wish you all the best. There's no problem in it, but if there is any kind of uncertainty, please make it clear, क्योंकि ये ज़्यादा समय तक नहीं जाती. I still remember my first year of graduation. I became very clear after attending multiple seminars of UPSC into my college that okay, UPSC is the thing that I won't be doing ever. It is not because of the tough, it is not because, you know, मैं भले यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दोज सब्जेक्ट्स इन करंट अफेयर्स एंड ऑल, एंड आई कीप रीडिंग दोज. तो मेनी पीपल आस्क मी कि अरे भाई तुम तो छिपके कर रही होगी. आई जस्ट सेड दैट आई डोंट वांट टू डू इट, सो आई एम नॉट डूइंग इट. एंड बिलीव मी, द डे आई स्टार्टेड बिलीविंग कि मतलब ये यूपीएससी वाली चीज़ मेरे दिमाग में पता है 2015 से थी, व्हेन टीना डाबी मैम एक्चुअली क्लियर्ड यूपीएससी. तब से मेरे दिमाग में था कि भाई करना है, यही करना है, ऐसे यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे, ऐसे ही ब्रेक लेकर, सब कुछ डिसाइडेड था. बट वो चीज़ें काम नहीं करती. नाउ इफ आई सी दैट माई ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग, बट जो मेरा मेन पार्ट था वो अब भी सेम है, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट. तो rather than I am not asking you people that you be clear that what you want to do, but मैं सिर्फ इतना कहूँगी, you need to be clear what you not to do. मतलब आपको जो नहीं करना है वो चीज़ के बारे में ज़रूर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि और जो करना है वो तो ग्रेजुअली क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि हर बार एट अ पॉइंट क्लैरिटी नहीं होती. ट्रस्ट में कभी कभी एक 10 साल के बच्चे को पता होता है कि उसको फ्यूचर में क्या करना है और वो कर भी लेता है, और कभी कभी 20 साल के बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ वर्ड हियर दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल in my opinion, which is explore. Trust me, I'm using this word since my class 11th, and it's a kind of a miraculous word for me, because इसने जो tremendous changes लाए हैं मेरी लाइफ में, that is something here good. क्योंकि इंटरनली मुझे ऐसा था कि मुझे पता है क्या करना है, बट आउटसाइड में लोगों को बताती थी कि नहीं यार मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, और आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग. बट ग्रेजुअली मेरे इंटरनल को पता चल गया कि यार तुमको ना सच में नहीं पता तुम्हें क्या करना है, और यू कैन से दैट थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है. एंड द डे आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वर्ड एक्सप्लोर, मेरे मन में ऐसे आने लगा दैट व्हाई नॉट ट्राई न्यू थिंग्स. कुछ नया करो, कुछ नया मतलब ऐसा नहीं है कुछ तूफानी कर दो, मैगी में चॉकलेट डाल दो, नॉट इन दैट वे. आई जस्ट मेंट टू से दैट, वेल दैट वाज अ लेम जोक. तो आई जस्ट मेंट टू से दैट कि यू शुड be clear about
what is your dream, what is your core desire to do it, because trust me, there is immense satisfaction into it. Many of you don't know about it. If you are the one who has been connected here since a very long time, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे beside teaching I really love reading books and random articles, you can say. Or beside this, I also like cooking. Like, cooking is such kind of a therapy for me. When I see the colors of those vegetables, I become crazy. Like, anyone can say me that I'm really crazy person. I am quite enthusiastic when it comes to cooking and all. But someone says that, hey, you can cook so well, why don't you make your career into it? I say that I am very clear about my passion and my profession. I know that what I wanted to carry it as a profession and what I want to carry as a passion. ठीक है? It is great if you know that your passion is profession. ठीक है? क्योंकि सबके लिए मैं मानती हूँ ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता, सबके लिए एक जैसे फॉर्मूले कभी वर्क नहीं करते. दिस इज व्हाट आवर सोसाइटी एक्चुअली मेंट अस कि ये करो तो ये हो जाएगा. नाउ मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है पिछले 3 साल में ग्रेजुएशन के, दैट आई नो एग्जैक्टली दैट हाउ थिंग्स वर्क. हो सकता है किसी की ये वीडियो देखने के बाद भी आंख ना खोले, हो सकता है कोई 4 साल 5 साल बाद भी धक्के खा रहा हो, बट जब तक एक इंडिविजुअल ने अपने टाइम पूरा नहीं कर लिया हो उसका कुछ नहीं हो सकता. सो मेक श्योर, रादर देन हैविंग द क्लैरिटी, यू शुड हैव दैट व्हाट यू आर सपोज नॉट टू डू. So I think it should be enough in order to make your right choice. Right choice कुछ नहीं होता है यार, कोई भी पाथ चूज कर लो फिर उसको सही प्रूव करो, वो right choice होता है. So just do it if you believe in it. So do let me know comment section अगर आपको ये वीडियो helpful लगा हो and you are looking for more such kind of videos, because honestly speaking I'm not looking forward to give you people a motivation, because that is something that I don't have and I don't want it to. सब motivational speaker हैं and I don't want it to be the one. I'm just the one who actually has something and catering that to you people. That's it. Hit the like button, share this video and subscribe. Studyship with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में.